Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. So today I'm going to exactly replicate what Aditya has done yesterday in his video. I'm first going to cover the entire analysis in English and later on I'm going to cover the same in Hindi. So for those of you who have been complaining that the duration of the video is getting too long, please do appreciate that it does take a bit of longer time to cover the entire analysis in two languages. So without wasting much time, let's get started. So starting off with the Bank Nifty. Bank Nifty on the weekly time frame, it has closed below this particular candle, which was the earlier week. However, there are 2 more days left, which is Thursday and Friday, and then we will get a clear confirmation whether intermediate top has been done for Bank Nifty. Coming then to the daily structure. The daily structure, if you remember, there is a clear breakdown of this particular rising channel. This particular rising channel, this was yesterday was the breakdown, and we will discuss more when we come on the daily and the sorry, in the 15-minute time frame. And today we did see some bounce from the lower levels. Okay, so first I'll just cover what we did today, because a lot of you guys usually ask us on the comment section, what did you guys do, how did you handle your things, your open positions. So just like the previous day, today also, like yesterday also, we were carrying overnight shorts. This day when we were carrying overnight shorts, the other day it actually opened with a gap up. However, today what has happened is today it opened with the gap down, thereby rewarding uh, those of short sellers who were carrying shorts overnight. And within 5 minutes we have actually exited our short position. The only reason why we exited our short position is because we were sensing some sort of an extended down move. Now what is extended moves, I am going to cover in the later sessions when we are going to come up with the education series. So that was the reason we were actually expecting some sort of a up move, and also because it was nearing the 46,947,000 band, 47 being a psychological round number, and 46, so this was the zone where market had taken a sharp bounce on 21st of December. So that's the reason we did exit our short positions. And then what we did, we actually moved very far OTMs, because we were expecting if at all any sort of a green candle comes, then there will be some spike. However, to our surprise, it was such a huge candle, and the worst part is it didn't give us enough time to take an entry, because even though it looks very huge candle in 15 minutes, even in 5 minutes it was very huge. And when that candle had formed, the premiums on the put like decayed like anything. So then from the risk reward perspective also, we were trying to analyze whether to take entries now, or should we wait for some sort of dips. However, because a market was not giving any much opportunity, then we finally entered into puts. What we were doing was we were holding strangles thereafter, but very far OTMs, because we were expecting some sort of a sideways action. In fact, if you guys remember, I have actually mentioned it in my timeline as well on Twitter. If those of you who have been following me on Twitter, that I have written that although it looks more of a sideways expiry with spikes, there was this small rectangle wherein the prices were moving. However, it looked more of a spike day. Now I'll tell you why I was expecting that kind of a. See, there was the seller was the big seller was here, right? And then there was a strong buyer here. There is a strong seller here, and then there is a strong buyer here. Now what will happen, the moment prices will start moving up, it will try to hit resistances on the upside, and on the lower side there is a very strong buyer who actually showed up right in the morning itself. So that's the reason I was expecting market to like expire sideways. However, to our surprise, when this particular candle happened, puts actually 4x. We were working with wider SLs today because we were expecting sideways market. However, despite having wider SLs,
which was almost 4x, but our quantity was predefined. That's the reason, like we never went into like losses. We already had good overnight profits, and then we had to book some losses on the put front, because it I mean the system triggered the SL because of because in this kind of a candle, which looks very like very challenging these days, because the kind of weeks that we are in, this kind of spike doesn't warrant 4 to 5x kind of a move in the options, especially when there is only 2.5 hours left for the expiry. However, our puts did spike, and then uh, we did exit, the SS on the put side I had kept it on the system, so that's the reason it got triggered. Thereafter we were just selling calls, and then we recovered the losses that we had made on the lost on the put side. Overall we did close in green because we were in good profits on the overnight position itself. However, from the expiry front of view, it's not one of our greatest expiry, although closing green was okay, majorly because of the overnight short position which got rewarded and we exited on time. So like let's understand from the tomorrow's perspective. Tomorrow, first and foremost, again what will happen now, the range has increased. It is somewhere in the zone of 47,000, and the, as I mentioned, the strong seller is here, which is 47,780 to 48,000, and the strong buyer is here. So basically, if at all we open somewhere above 47,400, then we are again going to experience some volatility, and we are going to just play with this within this range. And for those of you who are new, or who are in the learning phase, or who are experiencing losses in this particular series of January month, I would request you to stay away or play with very minimum quantity, because the range is quite huge, which is 1,000 point range, and within that there will be frequent 4 green candles followed by 4 red candles, wherein the ultimately the market won't do anything, and just reward the like that way you will see it is sideways. However, the spikes would be very difficult to manage. So for those of you who are new, please stay away for some time, or play with very limited quantity. And if at all, for people who are short, if at all market opens somewhere in the zone of 47,200 and below, then we can get some opportunity, wherein if at all we see some sort of a price action with the market tries to touch here and then makes a down move, then we will try to initiate fresh shots again. Although I like, unless this level is taken out, unless this level is broken out, don't go aggressively short. Even if you're going short from this zone, just book it out at this zone and then wait out for new price action to form, because somewhere this is a exact reaction level where we had actually seen a sharp bounce on 21st of December. So as I said, if there is a gap down opening, even though we are going to play on the short side, it will be for very small number of points, like roughly 100 points, that's it. So else you can just give a skip tomorrow, and then we will see on Friday. Coming to Nifty was okay. So in case of Bank Nifty, just one last update. So this symmetrical triangle has been activated on this day, on Monday itself, and the full target is still pending. Although half target is done, the full target is still pending. It might so happen that market will do some more sideways action before reaching this level. Now let's move to Nifty. Nifty has been moving in this falling channel, and Nifty has been even much more challenging than the Bank Nifty, I believe. Although we were trading Bank Nifty, but then Nifty was much more challenging, I believe. First down move, and then sharp up move, then again down move. It was basically going all over the place, and at the very end we did see some sort of a short covering move. So for tomorrow, what happens? Again, very important to note here, Nifty has been testing this, has been flirting with this 21,500 level so many times. So looks like it is going to either take this level down with a gap down someday, if not tomorrow, someday.
else we are, whenever if at all it happens on the intraday front, we are definitely going to see a huge red candle. And for those of you who have seen my weekly analysis, or maybe analysis that I had made on Monday, I don't remember exactly, I guess it was made on Monday. So for those of you, I have actually told you one thing, that there was this gap here which will act as a support, and then there is a confluence of this particular trend line. I'll show it to you on daily as well. And that's the reason I had told you, because of the confluence, I'm expecting some sort of a support at 21,450. And see, Nifty exactly again, took support of this zone. Now, this a particular trend line is becoming weaker because it has already been tested 4x times, like 4 times. So, very cautiously, you have to now watch out for this particular trend line. And Nifty is not that bearish because it has not even broken the previous week low. Even though it broke previous week low for a very brief time, it again managed to close above 21,600. So moving to 15 minutes. So what we can see here now, 21,550 looks like an immediate support. Again, just like Bank Nifty, in Nifty what has happened here, the strong buyer has entered, very strong buyer, and here a strong seller has been, a strong seller is present. So somewhere in the range of 21,700 to 21,450 is the range that we are expecting tomorrow. Now, if at all we open with the gap up, now gap up opening is anything above 21,680, 690, or till 21,700. If at all we open up with the gap up, I'm expecting some sort of a profit booking. Why? Because we are already having this extended move, and above that we are getting a gap up opening. And secondly, what will happen, people who are carrying overnight long position, they'll get good profit in the overnight positions, and the moment they will see the profit, the immediate reaction would be to book it out. So then they will try to book it out. And also because it is then reaching the upper zone of this particular channel. And then we might expect market to then move this kind of a way, wherein it might take support of 21,550. However, if at all we open with a gap down, which is anything below 21,550, then just patiently wait for some price action. If at all we consolidate here and then we try to break down on the lower side, then I won't hesitate to take short positions on Nifty. The only reason being, this particular level has been tested quite many times, that particular trend line which I have showed you in daily. And 21,450, whenever it gets taken out, I will go short then. Although right now, looking at the price action, doesn't look like we are going to open below this level, so below 550 level. So expecting more of a sideways action again tomorrow. As I said, the only reason, because there is a strong seller here and there is a buyer here. So it's more of a fight between the buyers and the sellers. So in that case, usually it's the retailers who get wounded, right? So because of the spikes in the SL. So tomorrow also the view remains sideways for Nifty. So now for those of you, I'll just continue in Hindi. For those of you who don't understand in English, I'll just continue in Hindi. तो चलिए हिंदी में समझते हैं. बैंक निफ्टी के लिए चलते हैं. बैंक निफ्टी में पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने कैसे ट्रेड किया आज. तो कल हमने जैसे कि परसों की तरह हमने कल भी ओवरनाइट में शॉर्ट्स ही कैरी किया था. तो ओवरनाइट में शॉर्ट्स को तो रिवॉर्ड किया ही था, बिकॉज हम ओपन ही हुए गैप डाउन से. तो गैप डाउन में हुआ ये कि हमने ओपनिंग में विद इन 5 मिनट्स आई बिलीव हमने उसको बुक कर लिया था. रीजन क्या था बुक करने का, बिकॉज हमको दिख रहा था ये काफी एक्सटेंडेड मूव था इसमें, तो उस रीजन से हम लोग ने बुक किया. और दूसरी रीजन ये भी था कि यहाँ पर 46,900 47,000 जो कि एक राउंड लेवल है. 47,000 स्पेशली इज अ राउंड लेवल, एंड 46,900 का इंपॉर्टेंस ये है कि ये 21 दिसंबर को यहाँ से हमने शार्प अप मूव देखी थी. तो यहाँ की कोई बायर है जो यहाँ पर सपोर्ट कर सकती है, वो रीजन से हमने बुक कर लिया. उसके बाद हम लोग खुद वेट कर रहे थे कि पुट्स सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी.
हमने बुक किया और हम फार ओटीएम्स में गए, ताकि अगर अपमूव भी आए तो हमको प्रॉब्लम ना हो स्पाइक्स की। तो हम फार ओटीएम में चले गए, बट हम लोग वी वर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि कब हमको पुट सेल करने को मिलेगी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये मतलब अनएक्सपेक्टेडली इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि हमको एंटर करने से पहले ही वो पुट्स में डीके आ चुकी। उसके बाद हमने फिर भी जैसे तैसे करके हमने थोड़े पुट्स में एंटर किए। कॉल्स हमारे पास ओटीएम्स थे और पुट्स में भी हमने एंटर किए, देयर बाय क्रिएटिंग अ ट्रायंगल। तो जब आप कॉल भी बेचते हो और पुट भी बेचते हो उसको ट्रायंगल कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम वी आर गोइंग टू कवर इन आर हम हमारे एजुकेशनल सीरीज जब भी हम स्टार्ट करने वाले वहां पर हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने कॉल्स भी बेचे हुए थे, पुट्स भी बेचे हुए थे। उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पर जब ये डाउन मूव, थोड़ी सी डाउन मूव, ऐसी भी नहीं कि बहुत बड़ी डाउन मूव आई थी, यहाँ पर इतना वो पुट्स इतने स्पाइक हुए और हमने पुट्स के लिए सिस्टम में एसएल रखे थे एंड इट वाज लाइक हमने वाइडर एसएल रखे थे, लाइक 4x रखे थे, बट दैट टू गॉट हिट, हमारे एसएल सिस्टम्स में से निकल गए। उसके बाद हमने सिर्फ कॉल्स को सेल करके रोल डाउन कर करके हमने वो वाले लॉसेस जो पुट्स में लॉस हुए थे उसको रिकवर किए। ओवरऑल हम लोग ग्रीन में थे बिकॉज हमारे पास ओवरनाइट की अच्छी प्रॉफिट थी, बट इट वाज नॉट वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट एक्सपायरीज व्हाट आई वुड लाइक टू से। प्रीमियम में स्पाइक काफी, इनफैक्ट यहाँ इस कैंडल में या इस कैंडल में इवन कॉल्स में भी बहुत ही डिफिकल्ट वाली स्पाइक आई थी। हालांकि शायद हम बच गए बिकॉज कॉल्स में हमने फिर वो व्यू लिया हुआ था कि कॉल्स में तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गो जीरो। तो दैट्स अबाउट इट हमारे पोजिशंस के बारे में। तो कल के लिए क्या होगा हम वो देखते हैं। तो पहले वीकली में देख लेते हैं। वीकली में जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने प्रीवियस 2 वीक्स के नीचे की क्लोजिंग चल रही है अभी के लिए। हालांकि 2 दिन बाकी है और फॉर द वीकली कैंडल, जो कि फ्राइडे को हमें समझेगी, फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद हमें समझेगी कि वीकली की कैंडल कैसी बनी है। बट वीकली में यस डेफिनेटली थोड़ी सी अप मूव में कैप ऐसे दिख रही है, मतलब और ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते ऐसा लग रहा है। अब डेली में देखते हैं कि डेली में हमने यहाँ पर क्लियरली देखा कि ये जो राइजिंग चैनल है उसका क्लियर ब्रेकडाउन कल हमने देखा था और आज थोड़े से लोअर लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट आ चुका है। अब चलिए देखते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में कल के लिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर सेलिंग यहाँ से शुरू हुई थी, ये पूरा जो जोन है ये सेलर का, तो यहाँ पर इसको ऐसा मानते ये सेलर का घर, तो सेलर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रॉन्ग सेलर को मैं एस एस कर रही हूँ और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर है मतलब एस बी। ठीक है, ये जो 46,900 47,000 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर है। तो अब क्या होगा, ये बायर और सेलर के बीच में फाइटिंग चल रही है, राइट। तो कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो एक को हारना होगा, बट जब तक फाइट चलती रहेगी तब तक वो मूवमेंट जो है प्राइस में वो यही रीजन में मूव होगा, विच इज 47,000 से लेके 48,000, रफली 1000 पॉइंट। तो अगर मान लीजिए कि कल हम लोग 47,450 के ऊपर वगैरह खुल जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि मार्केट बड़े ही रीजन में ऐसे साइडवेज काइंड ऑफ एन एक्शन दे दे आपको, मतलब वॉलेटाइल होगा साइडवेज, बट वेरी स्पाइक्स बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि 1000 पॉइंट की रेंज है। मतलब और स्पाइक्स क्यों ज्यादा होते हैं आई विल शो यू, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए स्पाइक्स कब ज्यादा होते हैं, जब मार्केट में ऐसी मूवमेंट आती है, जैसे ये देखिए यहाँ पर 4-5 कैंडल रेड आ गई, मतलब बहुत शार्प फॉल आएगी, फिर जो कैंडल्स आएंगी सिर्फ कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल आएगी। तो होता क्या है, यहाँ पर जब रेड कैंडल देख के जिन्होंने कॉल शॉर्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली नॉट एट दिस जंक्चर, इसको देख के जिसने यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने लग गए, अब उन लोगों की वापस प्रॉब्लम होगी, फिर यहाँ पर आने के तो पुट शॉर्ट करेंगे, फिर वापस और नीचे आएगा। तो ये काइंड ऑफ मूवमेंट जो होती है इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर आप नए हो या आपको हाल ही में जनवरी सीरीज में लॉसेस हो रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा और आप ऑल्टरनेटिवली थोड़े दिनों के लिए स्किप भी कर सकते हो कि जब तक ये जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसको थोड़ा सा शांत होना चाहिए। तो तब तक आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा या थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो सेलर और बायर है इसके रीजन, ये रीजन से हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े बड़े मूव है ना, ये दोनों 47,000 एंड 48,000 दोनों बड़े रेंजेस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को साइडवेज होने के इस पे, अगर गैप अप खुलते हैं तो। और मान लीजिए अगर हम गैप डाउन खुलते हैं समवेयर इन द रेंज ऑफ 47,200 वगैरह, फिर हम देखते हैं अगर ये ऊपर जाता है फिर से रिजेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है और फिर ऐसे कोई ब्रेक डाउन कर देता है, तो देन हम लोग फिर क्लियरली हम लोग वापस शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं।
बट वो शॉर्ट्स हम कहाँ तक करेंगे, हमको यहाँ पर स्ट्रिक्टली यहाँ पर बुकआउट कर लेंगे हम 47,000 के पास हम लोग स्ट्रिक्टली उसको बुकआउट कर देंगे, या बिल्कुल थोड़े उससे पहले ही। द रीजन बिन कि यहाँ पर हम वेट नहीं कर सकते। अगर मान लो ये जैसे आज ही इतना बड़ा कैंडल आ गया, मान लो आप वेट करने गए और इतना बड़ा उतने में कैंडल आ गया, तो आपकी जो प्रॉफिट्स है वो भी इरोड हो सकते हैं बिल्कुल इन मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब क्या हुआ, एंड उससे पहले आपका जो अकाउंट एमटीएम जो ग्रीन में था वो अचानक से रेड में हो सकता है। तो टू अवॉइड दैट आप अगर कर रहे भी हो शॉर्ट्स तो यहाँ पर ही, वरना कल के लिए हम लोग एक दिन स्किप करके फिर हम देख सकते हैं कि फ्राइडे को क्या हो रहा है या नेक्स्ट वीक में हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की, लेकिन कल एक्सपायरी है निफ्टी की। तो निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हम देखते हैं। निफ्टी में तो ये जो चैनल है डाउनवर्ड चैनल चल रही है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये दोनों ऊपर के रेंज को और नीचे के रेंज को उसने बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहा है। इनफैक्ट नीचे के लेवल में तो काफी टाइम उसने सपोर्ट लेकर बाउंस किया है। तो और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वाली लाइन देखो आप, ये वाली लाइन, हाँ। तो ये निफ्टी ने 21,500 के पास तो बहुत बार बाउंस खाई है। मतलब अगर हम गिनने चले तो ये देखो 1, ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5, 6, तो छह बार हमने निफ्टी में 21,500 से बाउंस लिया है। अब ये 21,500 या तो गैप डाउन से जाएगा, और अगर इंट्राडे में मान लो जिस भी दिन निकलेगा अब के बाद, तब वो बहुत बड़ी कैंडल से होगी। बट तब तक हमको वो तो जब होगा तब होगा। अब हम पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर 21,550 कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। अभी क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने सुबह से बहुत बार इसने पहले तो रेजिस्टेंस खा ली और उसके बाद उसने ये ब्रेकआउट दिया। इसके लिए अब व्हेन ये जो अभी जो पहले अर्लियर रेजिस्टेंस थी ये अब सपोर्ट बनेगी। अब मान लो कि मार्केट अगर गैप अप से खुलती है, अभी गैप अप का ये जो रेंज है वो मैं आपको बताती हूँ। गैप अप का रेंज होगा एनीवेयर बिटवीन 21,650 से लेके 21,700 तक। यहाँ पर ये वाला जो भी, यहाँ पर मान लो इतने पॉइंट में कहाँ पर भी गैप अप अगर होगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा सेलिंग आ सकती है, कि थोड़ा सा सेलिंग आ जाएगा और फिर अगर यू टर्न लेगा फिर हम वॉलेटाइल, एज ऑफ नाउ हमको लग रहा है कि वॉलेटाइल होगा। क्यों? क्योंकि अब मान लो अगर आपके पास ओवरनाइट में लॉन्ग पोजीशन है और आप कैरी करके गए हो और कल मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो अब फर्स्ट थिंग तो आप उसको बुक करोगे ना, बिकॉज आपके ओवरनाइट के जो पोजीशन है उसमें प्रॉफिट दिख रही है आपको। और दूसरी रीजन ये भी है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है पास में। चलो मान लो अगर आपने बुक भी नहीं किया तो आप समझ लो कि आप उसको होल्ड कर रहे हो वो वाली पोजीशन को। अब होता क्या है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आप में कॉन्फिडेंस और भी आएगा कि अरे ये तो और ऊपर जा रहा है, तो मतलब लेट मी सिट, लेट मी ट्रेल। उसके बाद मान लो एक भी रेड कैंडल आएगा। अब वो रेड कैंडल देख के आपका जो प्रॉफिट, मान लो आपके आपके अकाउंट में प्रॉफिट चल रहा है 50,000 जब वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल हुई थी। उसके बाद अगर रेड कैंडल जब आती है तभी आपके जो प्रॉफिट है 50,000 से वो 45, 42, 41, 40 होने आ गया। तब आपको लगेगा अरे 10,000 तो कम हो गया, तो चलो लेट्स बुक इट आउट। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है जैसे, तो सब सब वैसे यूजुअली सबका वायरिंग या थिंकिंग वैसे ही होता है। तो पीपल विल स्टार्ट बुकिंग आउट। तो फिर इसके लिए हम लोग, और यहाँ पर ना थोड़ा सा एक्सटेंडेड मूव भी हो चुका है। अब एक्सटेंडेड मूव क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब हम हमारे जब हम हमारे लर्निंग सीरीज लेकर आएंगे वहां पर हम सब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो उस हिसाब से भी हम थोड़े से फिर सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर 21,550 से लेके ये ऊपर के रेंज में रहे। हावेवर अगर बिकॉज वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ तक भी आ जाए, मतलब 500 लेवल तक भी आ जाए। हमको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गैप डाउन से खुले, अब गैप डाउन का रेंज क्या होगा? गैप डाउन का रेंज होगा एनीथिंग ये वाले जो 520 से लेके 540 के बीच में। अगर इतना बड़ा अगर गैप डाउन होता है तो फिर हम अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर ब्रेक कर रहा है नीचे थोड़ा कंसोलिडेट करके, या तो फिर हम यहाँ पर इनिशिएट करेंगे शॉर्ट्स। और अगर यहाँ पर शॉर्ट्स इनिशिएट इस टाइम इस भी रीजन से कर सकते हैं क्योंकि ये जो पर्टिकुलर 21,500 है वो लेवल काफी बार टेस्ट हो चुकी है। तो अब जब भी टूटेगी तब वो अब नहीं रुकेगी, और कल कल के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी
पोजीशंस बिल्डअप हो जाती है। और अभी तो जब से निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग दिनों में हुई है, तब तब ओआई की जो बिल्डअप होती है इन नंबर ऑफ क्रोर्स, वो बहुत बड़ी होती है। तो फिर सडनली जो मूव आती है वो बहुत बड़े बड़े मूव्स ही देते हैं। तो अगर ये लेवल पे अगर ओपन होती है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके बेस बना के फिर अगर ब्रेक डाउन करेंगे, तो फिर यहाँ पर अच्छी शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है। हालांकि जैसे दिख रहा है और यूएस मार्केट भी फ्लैट वगैरह है, उस हिसाब से लग रहा है कि हम इतने बड़े गैप डाउन तो नहीं खुलेंगे शायद। बट देखते हैं कि कल कहा। बट अदरवाइज मुझे वापस यही वाली रेंज लग रही है कि 21,450 से लेके आप मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 21,770 तक या 21,750 तक, उससे ज्यादा लग नहीं रहा है। इतना बड़ा रेंज में ही फिर से मार्केट टाइम पास कर सकता है। छोटे रेंज के हिसाब से बात करूँ तो अगर हम 550 के ऊपर ही ओपन करने वाले तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो फिर यहाँ से यहाँ ये वाली रेंज हो सकती है 550 से लेके 750 700 तक, बस उतना ही। तो ये थी हमारी एनालिसिस फॉर निफ्टी। तो अगर आप लोगों को ये हमारी एनालिसिस पसंद आई हो और आप लोगों ने ये जो हमने पिछले पूरे वीक में जो भी हमारी एनालिसिस किए, उससे आपको कोई हेल्प मिली हो या आपने ट्रेड लिया हो, तो प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड हम मिलते हैं कल। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ ग्रेट निफ्टी एक्सपायरी। बाय बाय।